न्यूजीलैंड के बिटवीन पुणे में जो होने वाला है, एंड ऑल्सो रावलपिंडी में जो लास्ट टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान. लॉट ऑफ टॉक अराउंड रैंक टर्नर्स इन बोथ ऑफ दीज ग्राउंड्स. Starting with Gautam Gambhir's press conference today, straight, aggressive approach as usual, सीधा जवाब, no बकवास वाला mentality है Gautam Gambhir की. KL Rahul, the topic of the whole interview, Mustafa. KL Rahul, your thoughts? I mean, also what Gambhir said, social media doesn't decide the 11. That is giving a little bit of insight that KL might play. I think that अगर शुभमन गिल fit है and Sarfaraz is available, then I don't think KL Rahul will get a spot in the 11. But again, I don't know what the team is thinking. From the outside, मेरे को ऐसा दिख रहा है KL Rahul right now, out of the three, he's the one who's struggling the most. Although our memory is kind of short when it comes to KL Rahul, he has a half century against Bangladesh. But अगर आप तीनों को मिला के देखो, right now Shubman Gill and Sarfaraz are in better form. They both have hundreds in recent times. So I think that's the 11. You should. I think Shubman Gill comes back to the 11 and Sarfaraz also plays. अगर तीनों available है तो ये दो खेलते हैं. अगर एक available नहीं है, then KL Rahul will retain his spot. I think. Yeah, I think it's about a number 5 spot mostly कि भाई वहाँ पे खेलने वाले कौन हैं इनके अलावा, KL राहुल के अलावा. I mean अक्षर पटेल हैं. Now will you go with 4 spinners? नहीं, अगर आपके शुभमन गिल फिट है, वो नंबर 3 पे खेलेंगे, सरफराज आपके नंबर 5 पे खेलेगा. मतलब फिर भी अगर शुभमन के लिए और आप मे बी लाइक द वे दे वांट टू बैक हिम इज जस्ट लाइक कि भाई आप नंबर 5 के वो आर्गुमेंट फेंक देंगे तो सरफराज खेल सकता है वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है. बट सरफराज का भी बेबी हुआ है राइट नाउ, सो आई थिंक अगर वो पर्सनल लीव लेके हैं तो मे बी वो एक तरीका है जिससे आप KL राहुल को रख सकते हैं. बट गंभीर तो लुक्स वेरी एडमेंट कि भाई ही इज गोना कीप KL राहुल. आई मीन देखो, यस लाइक यू सेड KL राहुल का 50 है बांग्लादेश में, बट वो पिच पे ऑब्वियसली you expected like everybody was smashing it, already आपके इतने रन आ गए थे, उसके बाद nothing left. I'm not taking away 50-50, बट जो तरीके से आप बेंगलोर में आउट हुए, आपका होम ग्राउंड है, वो आपको बेटर पता है कि वहाँ पे सिचुएशंस कैसे और कंडीशंस क्या है. यू कैन डिक्टेट द थिंग. उससे पहले फिर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट इंजर हो गए, तो इट्स बिन a little bit of a rough ride for him in terms of injury as well, in terms of the fact that he's not getting runs on the bat. It looks like he has tremendous talent, we know it for a fact, but yeah, that one thing that is just lacking is runs, जो आप बोलते currency है to get into that team. So right now, अब situation जिस तरीके से dictate करी भाई, he's going to play according to us. According to me, I don't think he should play. Right, I was like, he's going to play, but he shouldn't play. No, I don't think he'll play. अगर उसको अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर उन्हें खेलेंगे. नहीं तो उसका जगह कहाँ बनता है? लाइक शुभमन गिल नंबर 3 पे है, विराट कोहली नंबर 4 पे, सरफराज आई मीन पंत 5 पे, सरफराज 6 पे, तो उसकी जगह नहीं बन रही मेरे हिसाब से. Then you gonna go with the extra spinner. तो I don't think he gets a place in the 11. He played, I felt the first test match, yes, उसको खिलाए over Sarfaraz against Bangladesh because they thought he's coming making a comeback and all that. They want to back him and they're looking at the overseas. But right now, current आप a series हार रहे. Gautam Gambhir said you're looking to win this series, so then you have to go with your best players. अगर and like it's not like KL Rahul has not been dropped before. आप T20 World Cup देख लो, उसको drop करके गए. It's not like उसको लेके गए या उसको bench पे रखे. Sanju Samson was given preference. Shivam Dube was given preference over KL Rahul. तो मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि उसको खिलाए नहीं खिलाना है. Only he'll play if one of these two are not available. I don't think otherwise क्या basis पे खिलाने का मतलब वही है ना कि आप कॉन्फिडेंस से आके आप ये बोलो कि बैक करेंगे, बिलीव है, एंड वो स्पेक्ट्रम में अगर आप लेके जब वो चलेगा जब दूसरे बंदे नहीं चल रहे यहाँ पे तो हमारा वही मेरा कहने का है, शायद वो कॉन्फिडेंस इसलिए आज गंभीर को बोलने के लिए कि भाई हम KL राहुल को बैक करेंगे. ऑब्वियसली वो तो बोलना रहता है एज अ मैनेजमेंट, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट कि या तो सरफराज छुट्टी हुए जो हमें पता नहीं है वो चीज़ के बारे में. उनकी न्यू बॉर्न बेबी इब्राहिम भाई बोले कमेंट्स में, द अमेरिकन मेरे भाई, ही टोल्ड अस कि भाई दैट सरफराज डिड हैव अ बेबी, मे बी वो बहाने से कर सकते हैं. आई नहीं, वो देखो वो बहाना नहीं होता. बहाना इन द सेंस लाइक दैट इज देन लाइक सरफराज कैन नॉट प्ले लाइक बिकॉज़ ही इज सेइंग भाई मैं नहीं खेल सकता. पर अब लाइक इफ यू गोइंग टू से दैट भाई KL राहुल के चक्कर में सब ऊपर नीचे करने वो तो होगा नहीं. वो नहीं तो नहीं, मसला नहीं है कि भाई नॉट बीइंग अवेलेबल जैसा आप बोल रहे हैं. तो गंभीर इज यूजिंग that sort of way to say कि मैं हम KL को बैक करें, like अरे उन्हें absent है तो best way to put it. Yeah, look, he's going to protect his player. He's not going to come and say KL Rahul is shit. I don't think he's going to say all that. But like if you just look at it, the 15 अगर squad देख ले, simple math है. If Shubman Gill is fit, Sarfaraz is fit, they both should play in the 11. Virat Kohli is at number 4. Rohit Sharma आपके opening with Jaiswal. मेरे को तो इतना वो नहीं दिख रहा. मेरे को the thing I'm more looking forward to is who is the bowlers. That's what
I don't know about. I think that's more of a thing. Jasprit Bumrah will play probably this game as Yeah. well. Like Gambhir last में बोलेगे भाई जसप्रीत बुमराह को शायद हम थर्ड टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट के बाद असेस करेंगे कि भाई हाउ ही इज डूइंग. देयर इज अ गैप बिटवीन 13 days या 14 days बिटवीन दिस एंड द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट. तो हम जब देखेंगे कि भाई बुमराह. बट या आई मीन अगेन अगर आप फर्स्ट टेस्ट जीते तो मे बी आप आज रेस्ट करा देते आपके फास्ट बॉलर. बट गंभीर जिस तरीके से बोले गोइंग फॉर विन्स नॉट गोइंग फॉर ड्रॉज एंड स्टफ. सो इट शेयर्स के भाई मे बी दे विल डेफिनेटली प्ले बुमराह एंड देन योर स्पिनर्स इन कुलदीप जडेजा अश्विन. सुंदर को भी लेके आगे स्क्वाड. सुंदर को भी ला लिया. That's why I'm confused. सुंदर भी अक्सर भी है नहीं. हाँ तो सुंदर अगर है तो फिर केएल का तो और भी प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे. Yeah, I mean maybe that's why they've gotten him into the team. Maybe Washington सुंदर as a batsman भी खिला सकते हैं उसको. I don't know उसको किस बेसिस पे लेके आ गया. अक्सर पटेल भी है शायद स्क्वाड में. बिकॉज़ उन्होंने वही बोले कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है उनके स्क्वाड में. टर्नर में तो तो ये भी हो सकता है. I don't know but ये भी हो सकता है अगर सरफराज लीव ले लिए तो सुंदर खेल सकता उसके जगह में और राहुल को बिठा के शुभमन गिल. ये भी हो सकता है. Like I don't know what the thing is but yeah I don't know what the reasoning of Washington Sundar coming into the 11 to the 15 is but he might be used as well. That is a bit confusing for him because Akshar Patel is already there for if you need a batsman who can bowl. But ठीक है something a bit different. Let's see what happens. Yeah 100%. I mean the way things are happening right now it is a little confusing. अब वो कल ही रिलीज करेंगे. पुणे का टेस्ट कल शुरू हो रहा तो लाइक गंभीर स्टेडियम सुबह पिच देखने वाले. बट आई एम प्रीटी श्योर 11 तो उनके दिमाग में है. विद ऑल ऑफ द लास्ट मिनट यू कैंट बी लास्ट मिनट पिकिंग वॉशिंगटन और केएल राहुल एंड स्टफ लाइक दैट. यू कहीं ना कहीं यू हैव इट in your head. Maybe you just rest Shubman Gill. His neck is not recovered. We know that he has an injury since the first test. He didn't play. So I think Shubman Gill is not available. That's the first thing. Second thing, maybe Sarfaraz only. So if that's happened, then you have Washington and KL coming in. And again, pitch dictating that Washington Sundar comes in for a spinning opportunity. Right arm spinner. Hey, he'll get the ball to move away from the left-handers. They've got left-handers in Conway, Rachin Ravindra, and yeah. So I think वो हिसाब से they're just trying to tackle them with the best options that are available. Do you see a Kuldeep Yadav or someone getting dropped on Sabha? I mean, there could be a possibility. I don't know, but if it's turning, then I think he should play. Ashwin should play. Jadeja should play. I think तीनों खेलना चाहिए. That's why I'm not sure about उनकी bowling attack क्या होने वाली है. That's the most thing I'm like looking at कि उनकी bowling combination क्या रहेगा. They got Washington Sundar in. Akshar Patel is also an option. Look, the Bangalore wicket wasn't turning at all. So I mean, if you have a spinning wicket in Pune, whoever the spinners are, I think should do well. मेरे हिसाब से look, Ashwin didn't have a great test either. If you see in Bangalore, Ashwin, Kuldeep. Even Jadeja, he got the ball to turn a bit, but apart from that, like the spinners didn't have the greatest of thing. But if the wicket is going to turn, then all three will come into play. So I would play all three in my opinion because they're all different, right? Lekin with the introduction of Sundar, with the introduction of Akshar Patel, I don't know what can any of these spinners can play, and I think पुणे का जो विकेट उन्होंने बोले नहीं सीधा सीधा बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टर्नर फ्रॉम व्हाट आई कैन गेज. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टर्नर. तो इस हिसाब से आपको 3 स्पिनर्स तो खिलाना है. अगर फोर्थ because arrival of Sundar automatically dictates that they're going to be turned. Yeah, right? Like that's one indicator के भाई है. And then again आप extra batsman होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो आप वो हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो I think yeah then Sundar fits the bill there and yeah Sarfaraz शायद available नहीं होंगे. So right now maybe I am thinking that they're going to go with one fast bowler, that's Bumrah maybe. And there's a lot of talk, I don't know what your thoughts are on this, but Siraj के बारे में काफ़ी लोग चर्चा करेंगे. He's not been consistent, he's getting hit in the test format, but मेरे हिसाब से I think Siraj does a good job of holding up one end. That's what his role is right now. विकेट टेकिंग जहाँ पे इंग्लैंड में आप लेके जाओ ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सिराज बिकॉज पेस है उसके पास, मूविंग अवेलेबिलिटी है. इंडिया में ही इज मोर ऑफ बैकअप फॉर जसप्रीत बुमराह इन केस ही डजंट गेट जस्ट टू होल्ड द टेंशन एट द अदर एंड स्पिनर्स दैट कैन पिक अप द विकेट्स. व्हाट्स योर थॉट ऑन लाइक सिराज एंड हिज फॉर्म? I think it'll be the pitch dictating the selection. If there is some movement or everything, I would go with Siraj because of his experience. But yes, I think if you see the way the New Zealand bowlers bowled as compared to the Indian bowlers, they were more effective. Siraj was not as effective, especially in the first innings. Even in the last innings, जहाँ पे India were defending 100, Siraj did get hit a bit. And but ठीक है, like I think that's part and parcel of being a bowler. You will not have peaks at the all the time, and maybe he should get rested, maybe should get dropped. But I think आगे जाके Siraj will be very effective, especially in Australia and England, and hopefully his form is there. So I think he can be used over there. यहाँ पे I wouldn't mind if someone like Akashdeep comes in, or if you go with the extra spinner, I don't mind.
आई मीन वही एक एक्स्ट्रा स्पिनर का ही ज़्यादा वो दिख रहा है मेरे को, बिकॉज ऑफ जैसा अपन बात करें पुणे की पिच शायद ड्राई होंगी एंड वहाँ पे यूजुअली कंडीशन आर नॉट दैट कोल्ड एंड स्टफ, ह्यूमिड रहता, हॉट रहता पुणे में। बट दे डू बैक सिराज, आप देखो T20 में भी उतना उसका फॉर्म नहीं था, बट दे बैक्ड हिम राइट थ्रू आउट दैट T20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा आई थिंक हैज दैट फेथ लाइक ही हैज इन KL Rahul, he has that in Siraj as well. He didn't drop him at any time, he kept him mostly I think throughout that tournament. So I think someone like Siraj will be back, but tomorrow agar conditions dictate so, then he can be dropped and you can have a Bumrah as a sole fast bowler. Yeah, 100%. And like he's spoken about dropping Bumrah or like resting Bumrah third test, maybe that's a very big opportunity, because yes, you need Bumrah fit, you need to give him 2 to 3 weeks of rest just before that BGT, because he's expected to play all 5. Yes. I mean, it's going to be a very tough task for his muscles, so we'll have to see that. A lot of people are also saying bhai Nitish Reddy ko hum rakhenge BGT mein, a lot of noise coming out from there, especially if he's going to India A versus Australia A tour. All eyes will be on him, fast bowling, a medium pace all-rounder. I mean, Hardik Pandya ke bare mein bhi charcha hai, but he's still not played a lot of test cricket. Nitish ke liye at least एक opportunity. I mean, I would keep both of them in consideration. Nitish Reddy, Hardik Pandya, वो conditions में आपको fourth fast bowler रहना मेरे हिसाब से ज़रूरी है. You can still win a test series without them, but I think it just makes your life easier. It helps your selection. It just helps you in the test match itself, because you can call upon them, bowl 5-6 overs, and it gives like Ashwin a rest. It gives Bumrah a rest. So I think one of them should be there, if not both, like at least be considered. So yeah, I'm all good with that. If they don't perform, that's different, but at least you have that option कि भाई we can go with that fourth fast selection का तो headache बिल्कुल है, because शामी भी अभी injured हैं, अभी भी like he had an interview a couple of I think आज से. अब मेरे को ये बोलो शमी, अब देखो we were talking about if he comes in right into the test series, you're okay with that because it's the start of the new series and you know he's a world class bowler. But what if what if it's going into the third test match, India is up 2-0, then maybe he won't pick up a Shami even if he's fit, right? Yeah, if they're 2-0 then definitely they won't, but I think it all depends on the circumstances. Depends on the circumstances, बिल्कुल सही बात है वो. And अगर आकाशदीप को consider कर सकते हैं आप as a all-rounding option as well now. I mean, he does bat, yeah, he bats. But all-rounder मतलब like a Shardul Thakur type, you would say, right? Yeah, maybe or maybe a bit lesser than that. Yeah, so I mean, फिर भी the Australian condition will be new to Akashdeep. I don't know how much India is ready to experiment or let's say be risky. I think that will be the better way to put it. How India will be ready to be risky. Under Gambhir, what I've noticed is that they're more aggressive as a team. They want to win the game. आप देखो बैंगलोर में भी जैसा गंभीर एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई वी स्टिल हम 2.5 दिन बैटिंग करने नहीं देख रहे थे हम, और 2 दिन में कैसा खत्म कर सकते हैं मैच. वी वांटेड टू बी विद मोर एग्रेशन. 100 रन शॉट थे एंड आई थिंक राइट है, बिकॉज बुमराह जिस तरीके से स्टार्ट कर रहे थे 2 विकेट निकल गए थे, बट न्यूजीलैंड पुलिंग इट बैक. विलियम ओरोर भाई वो बंदा तो अलग लेवल पे चल रहा है राइट नाउ. यू नो ही इज बीन फैंटास्टिक अगेंस्ट इंग्लैंड, इज बीन फैंटास्टिक अगेंस्ट इंडिया. तो उनको भी कीनली ऑब्जर्व करेंगे इन द पुणे टेस्ट. एंड देन सो आई मीन आई थिंक इट्स जस्ट लाइक टू सेट सर्कमस्टेंस. शमी इंटरव्यू में तो ये बोले कि भाई अभी तो घुटना ठीक है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग एल्स अबाउट इट, जस्ट pray and be as fit as possible and try to be as fit as possible and bowl my overs, and then जब टाइम आएगा जब हम डिसीजन लेंगे, अभी तो कुछ ऐसा वो नहीं है. एंड यू नो रोहित शर्मा भी वही बोलेगा सेकंड थर्ड टेस्ट के बाद अगर हुआ तो हम उनको इंक्लूड करेंगे. सो वील हैव टू वेट एंड सी, दैट्स ऑल वी कैन डू. बट सिराज, बुमराह, मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर योर फास्ट बॉलर्स, एंड देन यू गॉट अश्विन, कुलदीप definitely traveling as well. So we'll have to wait and see. A few comments, Mustafa. I guess they will back KL Rahul, Ibrahim Bhai Bore, Syed Ibrahim Bhai Bore. I guess they will be back in KL Rahul because the upcoming away fixtures में they want to keep KL secure. Plus सरफराज newborn baby का कुछ बहाना डाल देते होंगे लोग. I guess Australia, I think, is what he's saying. But I think the chances of KL Rahul playing in Australia like would be better if he is dropped from this test, and then you know if someone fails over there then he can get his chance over there. I think that's how you have to make it, because you have to take the informed players. आप ये सब बहाने बनाएंगे वो बनाएंगे, I don't agree with that. You shouldn't do that. फिर सवाल यही उठेगा मेरे हिसाब से कि भाई आप राहुल को इतनी लंबी रस्सी दिए, फिर ये 2 बंदों को आप 2 मैच देके फिर आप बीजीटी ये आप नहीं कर सकते वो, राइट? लाइक बीजीटी आप लाइक उन लोगों को खिलाओ आप, अगर वहां पे अगर फेल करे तो आप केएल राहुल को लेके आ सकते हैं. मैं तो वही बोल रहा हूँ, लाइक केएल राहुल should not be in the 11 because his form is not right now up to the mark and there are already other people in form. केएल राहुल को आप श्रेयस अय्यर को ये सब इतना बैक करे जब आपके पास ऑप्शंस उतने थे नहीं, मगर अब ऑप्शंस है. शुभमन गिल भी चल रहा, सरफराज भी चल रहा. अब वहां पे जाके अगर उन लोग फेल करे then you can bring केएल राहुल into the team. I don't think there's a problem in that. केएल राहुल का तो भाई बहुत टाइम से हो गया, लाइक there's always been a very big argument with this guy, and 2022 से in fact
अब T20 वर्ल्ड कप में देखो फेल कर गया, देन उसके बाद उसको नहीं बिठा रहे थे। मेरा इतना ही कि भाई अगर वो टीम से बाहर निकला, जैसे एशिया कप 23 से पहले मतलब ही हैड एन इंजरी, गॉट मैरिड, ही वेंट आउट ऑफ द टीम, लेट इट बी नॉट फोर्स बट इट वाज लाइक ड्यू टू कमिटमेंट्स व्हाटएवर, बट यू डिड मिस हिम इन सर्टेन ओकेजन। अरे हार केएल राहुल, लाइक इधर आप उसको लंबी रस्सी इतना दे रहे कि भाई लोग देख देख के भी उससे इरिटेट हो जाते हैं। But also he's a very easy scapegoat. In the 50-over World Cup final, that whole World Cup, he also performed along with Virat Kohli. He also performed against Rohit Sharma. कोई उसका नाम नहीं लिए, और जब फाइनल आया सब उस पे चढ़े, उन्हें डर डर के ना कोई रोहित शर्मा का शॉट के बारे में बोले, ना कोई विराट कोहली के बारे में बोले, ना सूर्या कुमार के परफॉर्मेंस के बारे में। Everyone picked on KL Rahul. This is an opposite opinion, but I'm putting it there because he is an easy scapegoat. And if you see, he had runs in that World Cup as well, and in the Asia Cup when he came against Pakistan, Virat Kohli का सब बात कर रहे थे, he also scored 100 against Pakistan in that same match that Virat Kohli scored. So I think with him it's like आपका short term memory वो है, like everyone short term memory is like अरे KL Rahul is thing. I'm not saying that, but मैं खुला बोल रहा हूँ he should not be in the 11 tomorrow because he's not in form. But उसको back करते because he does get runs. ऐसा नहीं है कि run नहीं निकालता उन्हें, run निकालता. For me, I think KL Rahul just needs to drop a few, like not drop in terms of retire from the format. I'm just saying, भाई, like last time this was my point when in 2022 he was playing T20, ODI and Test. Chalo, injuries were there. Rohit Sharma got injured. Virat Kohli, I think, was also on a break or something. But he was the captain. Then he left the captaincy. He had mental health problems. He said, "Nahi hota main captain." He dropped the captaincy. Hardik then became the T20. So I think एक फॉर्मेट लेके चल भाई तू, लाइक डोंट पुट हिम इन एवरीवेयर वेयर ही इज लाइक द ऑपोजिट ऑफ संजू सैमसन जो फॉर्मेट में लोग कम पढ़ रहे उसको वो फॉर्मेट है, इसको जहां जरूरत है वहां डाल देते हैं। मगर लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि मैनेजमेंट क्या कर रही है उसके साथ। कभी ओपन करा रहे, कभी मिडिल ऑर्डर दे रहे, कभी ग्लव्स दे रहे, कभी बोल रहे कप्तान बन जाओ, कभी वो कर रहे, उसको कंसिस्टेंसी दे रहे नहीं, राइट? लाइक आप बोल रहे कि ही इज ऑलवेज इन द टीम, बट व्हाट इज हिज पोजीशन? ही डजंट इवन नो। कल सुबह उसको बोल देंगे भाई ओपन करो ऑस्ट्रेलिया में, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ब्रो, इफ जायसवाल डजंट perform, they'll tell Rahul to go in the third test and open at the Gabba or something. Then what is he going to do? Like, so everyone blames him as the individual, but it's also the team management. It's not his call that he's playing every game, right? So you have to look at it from the other perspective also. Usko khila rahe kyun? Like, why are they doing it? They must see something in him. They think that okay, he is adjustable, so we can adjust him. And look, as a wicket-keeper batsman, he did the job in the World Cup. वो 50 final was not solely his fault. नहीं, I mean, so like he did the job in the thing. So it's both. You're also correct that उसका form नहीं चल रहा, कभी-कभी उन्हें run नहीं बनाता, उन्हें pressure में आ जाता, वो बात सही है. But at the same time, he's also done his job when required at times. South Africa में बचाया था. I mean, I'm not saying that, but like. और अभी फॉर्मेट्स थोड़ा इग्नोर करो, अभी कल उसको अगर खिलाए तो वो उसकी गलती नहीं है, वो मैनेजमेंट की गलती है। वो तो उनका कॉल अल्टीमेटली। आई मीन ही इज प्रॉब्ली, सी देखो, दे आर आल्सो सीइंग जैसा आप बोल रहे समथिंग इन, बट माय थिंग इज जस्ट लाइक टू द मैनेजमेंट, मे बी नॉट जस्ट केएल राहुल, केएल राहुल से कुछ लेना नहीं, बट भाई आप उसको एक आध फॉर्मेट रुका के देखो। आप उसको T20 भी खिला दिए थे, बीच में ODI भी खिला दिए थे, टेस्ट भी में आप घुसा दिए। लाइक आई गेट इट, ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर, ही कैन विकेट कीप एंड नाउ यू हैव विकेट कीपर, यू हैव जुरेल, यू हैव पंत, यू हैव गॉट ईशान किशन को भी आप हकाल दिए, उसको भी वैसे करे, आप हर जगह खिलाए, बट उसको तो इवेंचुअली आप पिक्चर्स निकाल दिए। सो मेरे हिसाब से आई थिंक केएल राहुल को भाई धीरे धीरे लाओ, लेट हिम गेट रन्स अंडर वन फॉर्मेट, डोंट पुट हिम इन एवरीथिंग। I know he's a great player, he's a fantastic player, he has good technical ability. I think one of the fewer Indian batsmen who have very good technical ability. I say KL Rahul is one of them, but you just need to bring him slowly in, don't rush him into everything and say कि भाई तुम ये भी खेलो, फिर रोहित इंजर है तो तुम कैप्टन भी बन जाओ, इन्हें है तो आप नंबर 5 पे आ जाओ। तो आई थिंक ही नीड्स हिज टाइम डेफिनेटली, बट या अभी इट डजंट लुक लाइक द बेस्ट ऑफ सिनेरियोस, वी नो हिज कैपेबिलिटी। इन इंग्लैंड यू रिक्वायर्ड हिम एज अ ओपनर, वहां पे उन्हें सेंचुरी मार के दिखाया आपको। इन साउथ अफ्रीका यू नीड हिम एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वहां पे उन्हें सेंचुरी मार के दिखाया। सो व्हेन ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी, नॉट एवरी टाइम, बट ही इज performed when required. But yes, there are times when he's gone through a rut and he's got dropped. T20 में उसको खिलाई नहीं वर्ल्ड कप में उसको, and that was the right decision. Same thing tomorrow, if everybody is available, then it's उसका नहीं बनता जगह. I don't think yes, in Australia when the ball is moving around or if there is like extra bounce and stuff, and if Shubman Gill and Sarfaraz are not performing to that level, then you can bring him in. पर मैं आपको बांग्लादेश से पहले बोल रहा हूँ कि सरफराज का जगह बनता KL राहुल से आगे 100% बनता. Sarfaraz going to Australia?
Yeah, 100%. There is no doubt about it. If he fails, then you can drop him. But like, there is no way you cannot put Sarfaraz. वो ऋषभ पंत and I mean good news ये है कि भाई ऋषभ पंत fit है. He's going to play tomorrow. He's going to he's fit and he's roaring to go. And मतलब it'll be very fun to see Sarfaraz and Rishabh Pant like what we saw in Bangalore when they play in Australia. Yeah, and both of them are very aggressive batters. They bring that like that extra X factor in Indian cricket. दोनों जो है aggressive खेलते. They take the attack to the opposition, and they're the ones who made that test match. जो Gambhir बोला 100 runs short. It was because of these two. The way they batted, at the frequency they batted, the run rate they're batting. I don't look game बनाए वो. So yeah, I think it's great that they performed like that, and you have to go on form, I think, and right now they're both doing well. They both, for me, are on the plane to Australia. अब वहाँ जाके अगर failures हुए, you have options. I think that's how you have to look at it. अगर बंदा नहीं चल रहा, you can back him for a couple of tests, then you can make changes if required. But you need your squad players over there. You remember in that last series, Mayank Agarwal जो है, he had a shocker in the first couple of games, उसको drop मारे. But in the last test, what happened? You didn't have any players. Everyone was injured. अब Mayank Agarwal लेके आए. He had a solid partnership with Rahane in the gap before Pant came in, right? Yeah. So like even if he was not informed, his experience of playing in the last series in Australia translated into this series, and he did score a few runs, Mayank Agarwal, and this was in the middle order, whereas before it was in the top order. So I think you will need squad players like a KL Rahul, and like even Jurel and these guys will be needed in Australia आगे जाके. बिल्कुल. Ibrahim Babure, did you see Zimbabwe broke the record for the highest T20 international score of 344 against Gambia? Yeah, that was 133 and 34 or 43 balls by How much was 100 in? 15 sixes by Sikandar Raza. I mean, वो तो पूरे leg side पे उन्हें कैसा है, leg side पे खतरनाक है उन्हें. I mean, yes, you would say Gambia, but it's 20 overs. कितने बॉल में मारा century? I don't know century कितने बॉल में, 143 or something and 43 or. Because the only reason I'm asking is because it could be the fastest 100, right? Like it could be, yeah. 15 sixes किसको बोलते हैं भाई? Like Gambia वाले बेचारे, I mean, they're still, I think the match is still going on, but there's no way, like if they chase it down, it'll be too funny. But yeah, I mean, record is record. You got to respect it. 33 deliveries, yeah. So I mean, it's not the fastest, I think, right? No, I mean it's faster than Shahid Afridi, I think, but it's not the fastest. Yeah, so I mean, congratulations Zimbabwe breaking the record. India hit 298 in Hyderabad, and we were all excited, but they just came out guns blazing. The Pakistan versus Australia tour is going to be fun, बोल रहे Syed Ibrahim bhai. Yeah, I mean Australia, England, sorry, Pakistan, England, Rawalpindi, बड़े पंखे लग गए. Teams are out. Shahan Masood going with the same 11. England resting Matthew Potts and bringing in Rehan Ahmed. Mustafa, what's your thoughts? 1-1 going into the Pindi. Yeah, I think that's given you the indication कि वहाँ पे भी turn होने वाला है, and उन लोग नया trend या fans का लेके आए वहाँ पे to make it spin a bit more. And yeah, I think this is what Pakistan should have done from the start, and in the last 2 years they missed a trick 100%, and that is the selectors, management, captain, everyone should be blamed for that. But right now I think they're going the right path. If they lose this series, at least they've shown fight in this series, right? उन लोग दिखाए कि भाई हम लोग इंग्लैंड को हरा सकते हैं, हम रिस्क लेंगे, एंड सब बैठ के बोल रहे थे इनके पास स्पिनर नहीं है, वो नहीं है. They fooled you into telling you कि भाई स्पिनर नहीं है उनके पास, and I don't blame you. It's not your fault, it's their fault. They fooled you, and I told you, bro, लगाओ टर्नर, फिर देखिए ना यही हुआ, right? And like you, कितने लोग होंगे who thought कि पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है. But वो यार 29-37 year olds हैं. जो भी हो, सीरीज जीता नहीं जीता है. उन्हें भाई नोमान कितने विकेट लिया लास्ट इनिंग में, तो they fooled how many people like with saying spinner नहीं है. So I think they done the right thing. Now if they lose this match, win this match, वो तो आगे की बात है. At least the intention is correct now. And from an English point of view, look, it's a challenge. It's not going to be as easy because these are their weaknesses. They have to be a bit smarter. I'm sure the toss will help if they win the toss, but still, they will have जब आप 8 विकेट खो दिया ऐसा एक स्पिनर को, it plays on your brain, and it's not going to be easy for them. Ben Stokes has to take more responsibility, and the rest of the team also has to. Joe Root and these guys have to take responsibility, and a lot of responsibility lies on the shoulders of Leach and Shoaib Bashir, and I'm sure Rehan Ahmed will also be put under pressure. He's a young spinner, leg spinner. It won't be easy for him. So England will be under pressure now, and it should be a great test match. I'm looking forward to it. The only thing is, you never seen spin in Rawalpindi. Do you think there's a possibility कि ये जितने भी लोग स्पिनर जा रहे कहीं
कहीं फ्लैट निकल के आ गया विकेट। वो तो हो सकता है बट आई थिंक तो ओवर बॉलों पे भाई सिकंदर आजा के भागा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो तो हो सकता है बट वी हैवंट सीन स्पिन इन पाकिस्तान पीरियड इन द लास्ट 3 years, right? Like under Babar's you don't know what they didn't players, you don't know what pitches they I think it was the intention of keeping it flat. I'm sure, I'm pretty much sure it's going to spin. मजा आ जाएगा यार, नहीं स्पिन हो रहा बोल तो खत्म भाई, वहाँ फिर बैठ जाता बेंटेकेट इन पूरे रूट एंड हैरी ब्रुक। बट yeah, I think right now 3 spinners from England, 3 spinners from Pakistan. I mean it's the same, no changes there. BGT fast bowlers Bumrah, Shami, Siraj, Akashdeep, Harshit और मयंक। Mayank Yadav, again, I don't know what his fitness is. Is he in the squad to India? Yeah. To Australia? तो वहाँ जाके उसको assess कर सकते हैं आप, फिर देख सकते हैं if he can bowl those overs, 20-30 overs with the red ball, then he could be a possibility in that. What are your thoughts? Jason Gillespie came out in the press conference and he said that, you know, I'm not I don't talk about selection and stuff. I mean, ideally what you think is the coaches do the selection and then the other selectors and they have a discussion. He said there's no discussion with us. We're just match day strategists. Like we help the players, we get them fit, we get them ready. I mean, it's like Pakistan using their coaches as like physios. I've never heard that from a coach, so I don't know. Like that's so like yeah, that's I think weird. the coach, yeah, either he's lying or no, he's openly saying it like, भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम. I'm just a match day strategist. We get the bowlers ready, we prep them, we get them match fit, that and that's it. Possible. Like we had no conversation possible, about the selection with Aqib Javed and no one came to us, no one spoke to us. We just come, we do our match day preparation and khatam. Yeah, I've never heard a coach say that. So like if he said that, then it's weird. And Australians, man, they're always मुंह पे बोल देते जो भी. Yeah, or he's just wanting to just put it out, like he just like doesn't want responsibility, so he's saying it. But I can't imagine कि coach is not involved in team selection. At least 11 squad ठीक है, maybe the selector can choose the squad, but in terms of 11, I'm sure they have a say. Yeah, I mean वो तो फिर क्या फायदा कोच का? वही है ना, तो उन्हें हंसते हुए बोल रहा कि भाई मेरे को तो आप लोग मतलब ये मत सोचो कि मैं सिलेक्शन में, मैं सिर्फ स्ट्रेटजिस्ट हूँ. स्ट्रेटजिस्ट बोल रहा हूँ. तो उसमें भी उसका क्या काम है फिर? देखो आपके पास बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है. बॉलिंग कोच वही है, गिलेस्पी है. तो मेन कोच कौन है? गैरी कर्स्टन. हाँ, तो फिर उन्हें कर रहा हूँ सिलेक्शन में. Yeah, maybe Gillespie doesn't, then it's fine. I thought Gary Kirsten, Gillespie were अलग-अलग, एक white ball का, एक red ball का. I was confused. नहीं, I don't. So Gillespie is bowling coach. Yeah, then maybe he doesn't have a say. That's fine. But if the head coach is saying कि भाई doesn't have a, वही तो फिर weird है. But अभी वही बोल रहा था कि मैं सिलेक्शन में तो हमें कुछ बोलने का वो हक नहीं है and stuff like that. So yeah, that's okay. He's bowling coach. Yeah. So hearing some conflict. अरे शकील भाई is in the house. शकील भाई बोल रहे क्या बोल रहे? शकील भाई तो IPL क्रेजी हो जा रहे हैं. उन्होंने क्या क्या बोल दिए आप कहाँ भाई प्लीज. भाई पंत is going to be released. Yes, there's a lot of debate on Rishabh Pant, a lot of debate on Chennai Super King getting to Rishabh Pant, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के बारे में चर्चा हो रही है. There's a lot of possibilities this IPL auction. You know, there's so many news that are flooding in इधर उधर left right center से. तो yeah, I mean it's going to be hard. KL राहुल में ऐसा क्या है जिसको इतना बैकअप हो रहा है? आपको मैं शेन भाई मुस्तफा भाई आपको बेस्ट बोल सकते क्योंकि मैं तो आपके साथ जैसे ही हूँ. बट मेरे हिसाब से यस KL राहुल टेक्निकली गिफ्टेड है, हमें पता है. देखो लेट्स जस्ट टेक अवे कि भाई पोर परफॉर्मेंस हटा के KL राहुल प्लेयर तो अच्छा है, ये तो आप भी मान लो. बट बैकअप इतना देना मेरे को भी लाइक समझ में नहीं आया. ही इज़ यूज्ड एज अ यूटिलिटी ऑप्शन जहाँ पे रोहित शर्मा ये लोग कभी निकल जाते थे टीम में से. आप देखो 22 में भी रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, कैप्टनसी उसको दे दिए थे. उसके बाद 23 में भी आप उसको WTC नहीं लेके, ऑब्वियसली कमिटमेंट्स थे उसको, फिर इंजर हो गया था. बट देन आप उसको वापस एशिया कप रन, वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस है. फॉर्मेट वाइज उन्हें हर फॉर्मेट में खेला. दैट्स व्हाट टिक्स मी ऑफ. मतलब वो मेरे को सबसे इरिटेटिंग था. हाँ चलो आप एक फॉर्मेट दे रहे हो जहाँ पे वो अच्छा करा. आई थिंक ODI बोल सकते हैं आप. इवन श्रीलंका के अगेंस्ट 2023 के स्टार्ट में ही वन ऑफ द फ्यू गेम्स विद सूर्या कुमार जो स्लो बट मेरे हिसाब से यार लाइक ही शुड बी ड्रॉप्ड फॉर अ फ्यू फॉर्मेट्स. एवरी फॉर्मेट में देख के आप जैसे और मैं जैसे लोग तंग आ जा रहे हैं उससे. ही इज गुड. आई मीन साउथ अफ्रीका में भी आप आधी की टीम कोलैप्स हो गई थी, आके KL राहुल ही बचाया था आपको. ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया वर्ल्ड कप फर्स्ट गेम आपको याद है कि ही वाज द वन विद विराट कोहली हु स्टूड देयर. उसके बाद कपल ऑफ अदर इनिंग दैट वी आर नॉट रिमेंबरिंग. आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट एज वेल. सो ही इज अ गुड प्लेयर. आई एम नॉट गोइंग टू से ही इज अ बैड प्लेयर, बट इट्स जस्ट यस एवरी फॉर्मेट एंड द बैकिंग दैट you give KL Rahul or Shreyas Iyer, you should also give to Sanju Samson, you should also give to other players in that Indian squad. Ruturaj Gaikwad is probably knocking out the door. That's where you have to question the management. See again, जैसा मुस्तफा भाई अभी बोल के गया कि भाई it's not to do with the player.
प्लेयर तो आप भी हो शेन भाई, अगर आप मेरे टीम में हो, मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मे बी फॉर वट एवर रीजन मैं आपको बैक करूँ, वो मेरे पर है ना, वो आप पे थोड़ी आएगा। तो सवाल यही उठता है कि भाई मैनेजमेंट इतना क्यों बैक करे, कि इतना खास क्या है उसमें जो आप सवाल करें। एग्जैक्टली, लाइक देयर इज नथिंग लॉट स्पेशल, बट यस ही इज ऑलवेज यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर इंडिया नीड अ फ्रंट रनर और हेड टू रिप्रेजेंट देम। लाइक जब अगर विराट नहीं खेल रहा, रोहित नहीं खेल रहा, हार्दिक नहीं खेल रहा था, सूर्या नहीं खेल रहा, तो केएल को रखो, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इफ यू वांट टू से। So yes, backup wise, I think it's a little bit unfair what he's got if you compare him to a Sanju, if you compare him to a Rutraj, if you compare him to other Indian players. But what we're saying here is that it's not his fault, it's what the management is looking at him and what they're trying to get out of him. We really can't understand. You made him a wicket keeper, you protected him like that, he became a wicket keeper. Ishan Kishan went out of the screen, KS Bharat came for the WTC, he didn't play the WTC, so it's like very weird going into that. Gillespie is test head coach, Gary Cast. Yeah, that's what I thought. So then Gillespie is test head coach. Yeah, so then I don't understand the comment. Yeah, so that so very well. So yeah, Shane bhai is asking you the same thing, KL Rahul में ऐसा क्या चीज़ है जितना बैकअप मिल रहा है? इतना बैकअप तो अगर रहाने को मिल गया होता तो वो परफॉर्म कर देता अभी तक। हाँ, अच्छा प्लेयर है भाई, क्रंच सिचुएशन में हक देता है। ऐसा तो भाई पुजारा और रहाने को खिलाना चाहिए, वो मेन प्लेयर थे बीजीटी में। रहाने पुजारा को बैक नहीं मिला, रहाने को तो नहीं मिला, पुजारा को मिला, दोनों को मिला भाई। दोनों WTC फाइनल के 4-5 रहाना कहाँ खेला WTC? ये वो 19 हाँ 19 वाला, हाँ वही ये वाला पुजारा खेला शायद। रहाने कितना खेला? पुजारा तो भाई लंदन में 2 महीने काउंटी खेल के आया। हाँ तो बैक करे उसको। रहाने को भी कितना खेला है? हाँ राइट, सही है। He went to Australia twice, right? रहाने he went to England twice. अब तो उन्हें ऐड में भी आ रहा है, ऐड में आके अपना इंटरव्यू दे रहा है। 2018-19 tour he was in England, Rahane and Pujara, and Australia tour and South Africa tour, and then same thing over here. And Pujara and Rahane went in that second, not the last tour of South Africa, the tour before that, जहाँ पे आपको जीतना था, जहाँ पे एल्गर और इन लोग मार रहे थे। नहीं 18 के बाद एक टूर था, हाँ 21 नॉट लास्ट ईयर, जो फोड़ दिया था, हाँ डीनेलकर इनला जो हाँ, जहाँ पे ये रहाने पुजारा दोनों थे भाई। बट कोहली भी नहीं था उसमें, लाइक कोहली बीच में जाके आया था, 2 टेस्ट खेला कोहली, तीसरा तो आई मीन रहाने पुजारा को बैक कर रहे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बैक कर रहे, दे बैक्ड हिम वेरी वेल, दे बैक्ड केएल राहुल, दे बैक प्लेयर्स, ऐसा नहीं है। एंड द अदर प्लेयर्स आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट, लाइक समटाइम्स दे हैव नॉट परफॉर्मड ऑन दैट लेवल, सो मे बी दे हैव इट, लुक इट्स नॉट agar the Indian coach and the captain are backing him, there must be a particular reason for it, right? It's not like it's just like that. If they're playing for India, they very well know that it's going to cost them. They want to win. अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा कि भाई केएल राहुल के साथ जीत सकते हैं तो कुछ तो होगा। एंड लुक, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उन्हें ही इज नॉट परफॉर्म्ड एट टाइम्स, बट वैसा देखे जाए तो फिर रहाने इज ऑल्सो चोक्ड, पुजारा इज ऑल्सो चोक्ड, विराट कोहली इज ऑल्सो चोक्ड, रोहित शर्मा हिमसेल्फ इज ऑल्सो चोक्ड, राइट, लाइक तो वही है। मे बी ही इज नॉट एट देयर लेवल, बट ही इज ऑल्सो बीन ड्रॉप, लाइक केएल हैज विराट कोहली बीन ड्रॉप फ्रॉम इंडियन टीम? केएल राहुल हैज, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दे पुटिंग हिम ऑन केएल राहुल's level. KL Rahul also dropped in situations where he's either injured or he has had commitment. Like not necessarily true. T20 World Cup भी उस fit. T20 में तो खैर उसका IPL में कुछ performances नहीं आए बोल के, but you could have still taken him. Yeah, you could have, but you also didn't have that much faith. But if there was that much power, who gives a crap? Like he'll take him. If he doesn't, if he wants to play him, he'll take him. But it's not like that. उसके run आ चुके हैं, उन्हें खेल चुका है इंडिया के लिए. He scored runs in difficult conditions, तो इसलिए उसको वो कर रहे हैं। जहाँ मिला मुस्तफा भाई बहुत, राहुल जितना नहीं भाई बहुत मिला उन लोग को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। एंड but like I think I agree, जहाँ शेन भाई बोल रहे कि उतना नहीं मिला जितना, like राहुल भाई 22 में निकल गया, फिर वापस आ गया, फिर 23 में इन लोग तो इन कंपैरिजन देखो, चलो मैं तो पुजारा और रहाने के तो कब से खेल रहे पुजारा रहाने? 2012-11। हाँ तो खेले भाई 10 साल कैसा? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक अब आप देखो, लाइक संजू है, ऋतुराज जैसा कोई परफॉर्मेंस दे रहा नहीं बेचारा, उसको नहीं ला रहे आप। लाइक I mean yes, you can debate fifth and opening, there's a very difference there, but you can also try to mold someone like that who's in form. If you're saying KL Rahul नहीं फॉर्म में, फिफ्थ में भी, आप किसी और को मोल्ड करने की ट्राई करो। आप KL Rahul पे ऐसे अड़े हुए हैं, एंड KL Rahul तो आप विकेट कीपर नहीं है, पहले तो वो बहाना था कि भाई विकेट कीपर थे आप, मगर उसके बीच में आप मयंक अग्रवाल को ट्राई करें, आप विहारी को ट्राई करें, आप पृथ्वी शॉ को ट्राई करें, ऐसा नहीं कि नहीं ट्राई करें। KL Rahul को बिठा के तो ट्राई करें आप ये सब लोगों को। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो लास्ट वाला था, पृथ्वी शॉ वाज द ओपनर, नॉट KL Rahul. KL Rahul was on the bench, right? And then KL Rahul got injured also in the next. He didn't even play that series. Like तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ड्रॉप नहीं करें। आप जो बोल रहे हैं कि उसको खाली like think he पृथ्वी शॉ was selected ahead of him
as the opener in Australia in the last tour. So it's not like he hasn't been, and he was there sitting on the bench. He was fit. He got injured later. So ऐसा नहीं है कि नहीं करे drop उसको. It's just people have selective memory and he's a scapegoat, and that's all it is. I'm not saying कि अब अगर उन्हें खेलता वो तो 100% नहीं खेलना चाहिए. मैं तो वो बोल रहा हूँ. मगर आप जिस उसको तरीके से like there has to be a balance. He should be criticized, but at the same time he's not the only person who's at fault. And आप जो बोल रहे खाली उसको back करे, that is not true. They've backed a lot of players and they've tried a lot of players instead of him as well. उन लोग नहीं दिए performance. Prithishwar नहीं दिया performance. But somewhere what it is, he always gets a way to find his way back. Because sometimes he comes and scores those hundreds. These guys don't. राइट साउथ अफ्रीका में मारा सेंचुरी 2 बार मारा, इंग्लैंड में मारा उन्हें सेंचुरी जहां पे ओवरकास्ट कंडीशन है, उन लोग नहीं मारे सेंचुरी. तो बात तो सिंपल है. लुक, आई एम नॉट रिलेटेड टू केएल राहुल, आई डोंट नो हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस. आई विल क्रिटिसाइज इफ ही प्लेज टुमारो एंड ही फेल्स. लाइक आई एम द फर्स्ट पर्सन टू पुट माय हैंड अप. मैं तो बोल रहा हूँ बांग्लादेश. Bro, first we were sitting. In fact, it was me who said कि Sarfaraz should play instead of him. You said कि KL Rahul should play. Right? I said कि no, he should not play. Now I'm saying. But मैं जो बोल रहा हूँ, जो criticism चल रहा है उसका, like he has scored runs. मैं वही है. I think again it's just कि भाई. But why were you wanting him to play? Because you also know there's something in him. 100%. नहीं, मैं वो doubt कर ही नहीं रहा. But it's just for me कि भाई वो ने बेचारे हर फॉर्मेट में जो बीच में आ गया था, maybe just put him out for like जैसा थोड़े प्लेयरों को टेस्ट के लिए बने हुए, थोड़े लोग ओडीआईज के लिए बने हुए, वैसा आई थिंक केएल राहुल को स्लोली गेट हिम. बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. टी20 में तो है ही नहीं. आपके पास भर के प्लेयर्स आ गए. अब अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो ले लो, अब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई इसको खिलाना का कोई रीजन नहीं है. लाइक यू हैव अ सॉलिड T20 टीम, a solid under-19 emerging team who's playing right now, you know, against Oman. I mean, that's also been bad. Today fielding has been bad. But yeah, you have option. I think पहले के ज़माने में अब देखो अगर गिने चुने प्लेयर्स थे, इतने रोटेशन और जब आप खिलाए उन लोग नहीं दिया परफॉर्मेंस. तो yeah, that's also there. तो आपको पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखना. हम लोग केएल राहुल को ब्लेम नहीं करें. यस, ही इज इन पोर फॉर्म नाउ 100%. मतलब भाई आप खुद से सही डिफेंड नहीं कर पा रहे होगे थे. मे बी आपको पसंद नहीं आ रहा वो, मगर मेरे हिसाब से मैं लाइक आई थिंक दैट लाइक ही इज समबडी दैट इट्स नॉट ओनली हिज फॉल्ट और एनीथिंग लाइक दैट. आप सेलेक्टर उसको चूज कर रहे हो, उन्हें खेल रहा, उन्हें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंसेज है, लाइक ही हैज स्कोर्ड रन्स. आप लोग ऐसा बोल रहे सेलेक्टिव मेमोरी, आप लोग बोल रहे कि भाई ही इज नॉट यू नो लाइक ही हैज, इट्स लाइक यू नो ही इज paying to get into the team. That's how it's being portrayed. It's not like that. He's I mean, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई. Like that is not possible. Obviously, वो तो I mean, I'll put my hand up say हो नहीं सकता because जिस तरीके की इंडियन टीम है, जिस तरीके की स्क्रूटिनिटी आजकल. और मैं शायद इसलिए डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ उसको because I don't think वही है ना, उसका नहीं बनता अभी 11 में. Like मैं तो खुद exactly काउंटर आर्गुमेंट वही है कि मतलब भाई राइट नाउ उनको डिफेंड नहीं करे. बट मगर जो आप उसको स्केपबोर्ड बना के रखे, it's not only him. It's not, that's what I'm saying. Like it's not, and there is a reason why they've given him chances. They've given a lot of players chances, not only him. अब देखो श्रेयस अय्यर का ही ले लो आप. They did back him as well, but अब नहीं ला रहे टीम में because obviously जो भी वो मसला हुआ बट उसके बाद उनकी रांची में परफॉर्मेंसेस नहीं आए, दुलीप में परफॉर्मेंसेस नहीं आई, उनको नहीं लाया, उनको कंसिडरेशन में आई नहीं है. हाँ, देयर इज अ वर्ल्ड वेयर आई वुड एक्चुअली लाइक अगर जैसा वाशिंगटन को लाए, मे बी इफ दे वांटेड टू ड्रॉप केएल राहुल एंड गेट हार्दिक पांड्या जस्ट टू ट्राई हिम आउट, आई एम ओपन फॉर दैट. लाइक आई वोंट माइंड थर्ड टेस्ट में अगर आप हार्दिक पांड्या को ला रहे और समथिंग लाइक दैट, आई वुड लाइक टू सी दैट. बट येस, आई डू अंडरस्टैंड शेन भाई योर पॉइंट एज वेल एंड डू अंडरस्टैंड व्हाट मुस्तफा इज सेइंग. इट्स अ वेरी फाइन लाइन कि भाई आप बैकिंग कर रहे हो, बट अगेन आप कितने लेवल तक बैक कर सकते हो. बट ऑल्सो जब यू नो दूसरे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो खड़े होते नहीं. मैं पास्ट का बोल रहा हूँ. फ्यूचर का अगर आप मेरे को पूछे उसका नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बांग्लादेश से पहले उसको पिक ही नहीं करना था. करेक्ट. मैं बोल रहा था कि भाई क्यों बोल रहे थे आप? बिकॉज़ टेक्निकली वो ही इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट आर देयर एट दैट नंबर 5. सो इफ यू आर सेइंग दैट देन रोहित शर्मा कांट थिंक दैट. या 100% यू कैन. बात तो वहीं खत्म हो गई, फिर कोई आर्गुमेंट ही नहीं है. हम लोग दोनों एक ही चीज पे लाइक वो बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में जो पिछले वो अनफेयर है. बिकॉज उन्हें खुद जैसा लोग बोलते हैं भाई उन्हें ग्लव्स लेके घुस जा रहा है, वो कर दे रहा है, उसको दे रहे हैं, लाइक इट्स नॉट हिम. बट अभी उसका अगर आपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे उसका बनता क्या 11 में, मैं आपको जब से बोल रहा हूँ नहीं बनता उसका 11 में. I'm just saying in the past, like people are saying that उसको खींच रहे. No, now if he plays tomorrow, I don't agree with it. I think that Sarfaraz should play ahead of him. 100%. Sarfaraz should play ahead of him in Australia. Yeah, that's what only Sarfaraz has been. They gone on a personal leave. KL has not been. That is Sarfaraz's choice then, right? Yeah, like why if Gambhir is just using that Sarfaraz leave as an excuse to back him. But Gambhir does not. Gambhir and Rohit Sharma cannot drop Sarfaraz on that day. Only if he asks for only if he asks for only if he asks, that's it. वो drop नहीं होगा ना, वो तो excuse नहीं, वो like
रिक्वेस्ट होंगी कि भाई अब देखो केएल राहुल को उसको मैं आपको जब बोला था, जब उसको लिए थे वापस स्क्वाड में, उसको बेंच पे रखना था. इफ सरफराज डजंट परफॉर्म देन यू कैन ब्रिंग हिम इन. उन लोग उसको खिला दिए बांग्लादेश में. सरफराज तो मेरे हिसाब से खेलेगा, बिकॉज़ आई थिंक नोइंग सरफराज जितनी मेहनत रणजी ट्रॉफी में करा है और जितने रन मारा है, ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप द अपॉर्चुनिटी. भाई बच्चा हो गया, मिल लिया, खत्म, अब मेरे को जाना है. आई वांट टू ब्रेक थ्रू दिस इंडियन टीम एंड आई वांट टू बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर. ये रहेगा सरफराज का थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से. आई डोंट थिंक ही गोइंग टू गिव इट अप एंड ही शुडंट आल्सो. अब उसके बावजूद ड्रॉप करा है, उसको ड्राइव फिर बहुत गलत चीज़ है वो. लाइक दैट इज वेरी रॉन्ग. Like till Bangladesh, I was with KL Rahul. He did deliver a 68, but post this first test, main Mustafa bhai both are on the fence. Ke bhai, this guy doesn't deserve a spot right now in this. Bro, there was no way even in Bangladesh series that he should have played ahead of Sarfaraz, because Sarfaraz against England performed really well. Yeah. टेक्निक नहीं मैटर करता है भाई, परफॉर्मेंस मैटर करता है. अगर टेक्निक पे जाते हैं तो स्मिथ भी कभी टेस्ट मैच में ही नहीं खेल पाता. स्मिथ तो सेलेक्ट भी नहीं. ऐसी टेक्निकली गिफ्टेड बोले तो ही हैज अ लॉट ऑफ शॉट्स एंड वैसा, मतलब उसके इट्स द वे ही प्लेज एंड यू नो ही हैज मैच रीडिंग एबिलिटी. ही डज यू नो सिचुएशंस में आके जो ने आपको बचाया है, जैसा ओडीआई फॉर्मेट में भी करा है आपको. ही डन इट इन टेस्ट फॉर्मेट एज वेल. आई एम नॉट थिंकिंग भाई टेक्निक के बेसिस पे लो. इट्स जस्ट कि भाई यस परफॉर्मेंसेस, जैसे मुस्तफा बोले, व्हेन रिक्वायर्ड ऑन सिचुएशंस वेयर दूसरे प्लेयर्स नहीं खड़े होते रहे भाई, ही वाज देयर. ही डिड स्कोर अ सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका, ही डिड स्कोर अ सेंचुरी इन England. He has done his bit, but yes, I do agree कि भाई the rusty has been way too long for this particular player. But that again is a management call. It's nothing to do with. But you are also giving him that same rusty. That means you see something in him as well. No, in 2023 when he came back after the Asia Cup, that's when I was impressed by him. Yeah, and you backed him in this test. In this Bangladesh test. Yeah, you backed him. So you're also seeing something in him. Yeah. And other people are seeing. He has the ability. Just so confidence इतनी जल्दी अप डाउन होता है. That's the only problem. Also like आप उसके आंखों में देख सकते हैं confidence. Also I think ऋषभ पंत के साथ भी he can become the next scapegoat, right? Like उसको इतना the thing is performing so well, but उन्हें जिस तरीके का खेल था in Australia, he might have 2-3 failures. So बोलेंगे उसको निकालो टीम में से because the way he plays. So again it depends player to player. I completely agree with you. It's not just on technique. Like Rishabh Pant is not a test technical player, but he's amazing, right? So I completely agree with you. It's not like that, and that's why I'm saying कि right now जो फॉर्म में है उसको खिलाओ. रन्स डू मैटर. सो आई एम अग्रीइंग विद यू, ऐसा नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग जो क्रिटिसिज्म उसको पिछले पास्ट में दिए, इट्स नॉट ओनली हिम. लाइक ऐसा उसको दिखा रहे थे कि उन्हें लाइक खिला के पैसे खिला के खेल रहा है. दैट्स हाउ इट वाज पोर्ट्रेड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स नॉट लाइक दैट. उसको कोई देख के तो उसको पिक करे, राइट? Yes, hearing a conflict between Punjab and Arshdeep over retention price, and if he comes to auction Hyderabad, all in चले जाना भाई अर्शदीप पे. कौन बोल रही है? सैयद इब्राहिम भाई. अर्शदीप फॉर हैदराबाद. I don't know. The thing is, there's a lot of rumors going on, lot of things इधर उधर. अब हमारे को situation नहीं मालूम exactly. Right now, भाई, there are only 2 captains that are 100% retaining. That is, one is अपने वाले भैया, Pat Cummins, and the other one is your कहाँ के यार, नहीं मुंबई के भी नहीं, दिल्ली, मेरे को दूसरे वाले याद नहीं आ रहे, बट मेरा ऋतुराज भी नहीं है. आई थिंक ऋतुराज ऑल्सो नॉट इन रिटेंशन 100%. अभी धोनी का भी 100% आया नहीं कि बॉस हम वापस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. ही स्टिल गोना गिव सुपर किंग्स. आंसर आज क्या है? 23rd, 26, 27 तक शायद धोनी का भी जवाब आएगा कि भाई whether or not he is going to play this thing. So that is where Chennai is going to look for an opportunity to get Rishabh Pant from Delhi Capitals. Now the problem with Delhi Capitals is a lot. JMR and JSW, ये दो groups आपको मालूम के they own Delhi Capitals. ये साल JMR का है. JMR does not have that relationship that JSW has with Rishabh Pant. Park Jindal जो है, they have a very good relationship. Now I don't think Rishabh Pant is very comfortable with playing GMR for another 2 years till JSW come back. So I think he's looking for a new franchise. Why? Because Twitter पे भाई साहब रात के 12 बजे मैसेज कर रहे हैं कि भाई what if I go unsold in the auction. So there is a whole line over here that Rishabh Pant majorly is going to go in the auction. But if he goes in the auction and they right to match him? They right to match him, then he's stuck. Like, but he will go to the auction. But वो right to match, I mean Rishabh Pant अगर आया तो I mean people will throw the paddle left, right and center now. It will be on the GMR group who they are also looking at to retain, right? Like उनका भी wallet उनको समझ में आएगा. I think right now the only retention that they're looking at is Fraser McGurk. That's what the rumors are saying. Then Akshar Patel, then Kuldeep Yadav. They're going to spend 18 crore on Fraser McGurk. They are looking because he's like भाई वो foreign वो time के बाद आया. हाँ, so huge risk again. But yeah, Fraser McGurk.
योर कुलदीप यादव एंड योर अक्षर पटेल आर द वन इन कंडीशन. ऋषभ पंत आई थिंक अगेन इज नॉट कंफर्टेबल कि भाई ये GMR लोग अलग हैं, JLW से थोड़ा होमली मैटर फीलिंग वाली है. तो यहाँ पे वो एक चीज़ है. क्लास हमारे पास हैदराबाद में, बट वुड यू कंसिडर टेकिंग हर्षदीप इज व्हाट बने वाला आस्किंग. I mean, if he's available in the auction and you get him at a good price, why not? He's a good Indian bowler. I mean, excellent. He's a World Cup winner. He bowled brilliantly in that T20 World Cup final. So, of course, I would consider him if he's in that auction. Also, Punjab Kings will look for. So there, like I said, 2 को छोड़ के 8 franchises जिसको captain चाहिए. So Punjab Kings will probably go for Rishabh Pant. Your Chennai Super Kings will go for Rishabh Pant. Then your Knight Riders might go for like the. But वो Knight Riders मुझे समझ में नहीं आ रहा. They have a winning captain. I don't know what the hell they're trying to do. A lot of people are saying, I mean, जो मैं सुन रहा हूँ या sources जो बता रही है कि भाई श्रेयस अय्यर not happy there because आप जब जीते IPL आप श्रेयस अय्यर को क्रेडिट नहीं करें. हाँ, वो तो बिल्कुल सही है. He is upset like that. I don't know his relation with Shah Rukh Khan looks very good. जिस तरीके से शाहरुख खान में बोला भी गया है कि भाई ओनर बहुत सॉलिड है शाहरुख खान. Shreyash Iyer has played 2 or 3 finals as captain. He's won 1 and lost 2, I think. Yes. I mean, he has an excellent record in the IPL as captain. So if you have him, but now Kolkata is trying to consider Surya Kumar Yadav from Mumbai, and then there's a rumor, very strong rumor, that Rohit Sharma might stay in Mumbai Indians and become the captain. that you got from Mr. Rohit Jukla. Yeah, from Rohit bhai. So Rohit bhai is there, and also a few other क्या बोलते अपने Indian ये वो. Yeah, but, like I'll be very surprised if Rohit Sharma stays in Mumbai Indians. Yeah, if Rohit Sharma, because Rohit Sharma का वही है कि maybe at the end they came to their. But Ambani इतना सब ड्रामा करके. No, but it doesn't. For me, it doesn't make sense because you're looking to the future. Then why going to the past, right? Exactly. Like it doesn't make that sense. That was their whole plan on bringing Hardik. Yeah, like I understand if you change the captain to Surya Kumar, but I don't understand if you change it back to Rohit Sharma. बिल्कुल, I won't understand that point. But वही है कि maybe trying to make amends up. He's going to play 2-3 more years. शायद future उनके अंदर. All this happened because of that World Cup final, man. 50 over का उन लोग ऐसा. They thought कि हार गए तो खत्म रोहित शर्मा का रिटायरमेंट ये. They didn't expect him to be the T20 World Cup winning captain. I think that is where they screwed it up. Yeah, 100%. I mean देखना पड़ेगा भाई. What is the thought behind class in 23 crore auction में सबसे कम पर्स लेके बैठना पड़ता अब बोल रहे इब्राहिम भाई. हैदराबाद का बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मुस्तफ़ा भाई. यही सेंग कि खाली नीतीश रेड्डी को आप रिटेन करो और बाकी सबको भाड़ में जान दो. Let everybody go in that auction. An auction मतलब because उनका लॉजिक if I'm not wrong auction में जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतने प्राइसेस घटेंगे. प्राइसेस घटने से आपको वैल्यू फॉर प्लेयर मिल सकता है. और आपको क्या गारंटी है कि लाइक क्या बोलते हैं वो प्लेयर how much price he's going to go for, you can still try to match him. So you have an option. ऐसा नहीं है कि आप खाली उसको निकाल दे रहे. There is a chance to. That's the problem, right? If you retain everybody, then you have minimal amount. Look, it'll work the other way also. अगर आप 5 को retain कर दिए और ना चल गया and Rohit Sharma for example 30 करोड़ के लिए चले गया, then you will have the purse to pick up the other bowlers and everything. But I'm just saying why. Just go with the full purse and see what happens, and then you can pick up players. अगर आपको for example Travis Head नहीं मिला, right? Travis Head नहीं मिला, शायद आपको रोहित शर्मा मिल जाए, शायद आपको कोई और मिल जाए, शायद आपको you don't know, right? Like so that's what I'm saying. शायद आपको ऋषभ पंत. How important आपको लगता है कोर मेंटेन करके चलना? I don't think it's that important. Because अपना कोर कितना अच्छा चला लास्ट 5 years में. हाँ वो तो है, मतलब अच्छा तो नहीं है बट लाइक वही है कि 1 साल चला. अब लेट्स से अगर आपकी एक मेंटालिटी है, वो एक सही कैप्टन आ गया, आप कमेंस आ गया, आपको आप एक बिठा सकते हो एक मेंटालिटी या एक स्ट्रक्चर. डू यू थिंक यू वुड गो विद द सेम टीम लाइक बैगन के बात आए फिर 2 साल में ऑक्शन वापस आएगा? बिल्कुल. एंड जस्ट चॉप. Yeah, because look, I'm saying that Travis Head is an amazing player. I'm not saying उसको निकाल दो, but the auction is such that if you invest too much in these players, what is the guarantee they're going to come to next year or the year after, or they're going to have the same form? We don't know. अगर आपके पास पैट कमिंस कैप्टन है, फॉर एग्जांपल आप एक बंदे को रिटेन कर दिए, देन उसको जो उन्हें अपने हिसाब से उन्हें दूसरे रिप्लेसमेंट्स को भी निकाल सकता है. ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकता, राइट? आई मीन देखो अभी जो रूमर्स हैं है कि क्लास इन 23 करोड़, पैट कमिंस 18 करोड़. अगर ये ऑक्शन लास्ट ईयर था, नीतीश रेड्डी लास्ट ईयर अगर ये ऑक्शन था, आप सनराइजर्स में खाली शायद एक को रिटेन करते हैं जो क्लास so it all like so it keeps changing the dynamics in IPL. लॉजिक तो नहीं है भाई, लेकिन मैं 23 करोड़ for Klassen is basically giving an 18 करोड़ bonus on his current 5 करोड़ profit. 23 नहीं देना चाहिए, 18 is okay. 18 is okay, but like that's the उन्हें बोला 5 करोड़ में तो ऑलरेडी मैं हूँ, मेरे को उस पे 18 करोड़ दो. I understand he's the best T20 batsman in the world.
there's no one better than him right now in this format. And if he doesn't perform to that But level, that's the problem, that is right? going to be. But see, you can't question his performance. 2 years together, Yeah, he's been. but that's what I'm saying. If you retain him 18 crore, like the highest, but if you're giving him bonus 5 crore, then there's too much pressure on him. So I think that's. How old is he? Like 34, 35? 34, 35. Yeah, bro, that's a lot of And money. already he's on a 5 crore thing. So I think उसपे उन्हें 18 crore पूछ रहा. You know what I mean? So I think it's like बहुत ज़्यादा है that. वो. But it is a bit too much. 380% हाइक है उनके ऑफिस में. किसी भी ऑफिस में उतना हाइक नहीं देते भाई. 380% जिसको बोलते हैं आप. तो yeah, I mean वो एक है. Cummins, I think you think he will stay. I Again, think bro, like let me ask you a question. Pat Cummins is going to now play 5 test match series. Then he has a WTC. No, that's after. But he has a 5 test match series, okay? Then he has a Pakistan tour. Pakistan tour है. चैंपियंस ट्रॉफी है बोल रहा हूँ. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को भी ट्रैवल करना. अच्छा वो है पर चैंपियंस ट्रॉफी है राइट. ही इज गोइंग टू बी द कैप्टन ओवर दिस, गोइंग टू बी द कैप्टन ओवर हियर. व्हाट इफ ही गेट्स इंजर्ड फिर? या वही है ना कि सी अब ऑक्शन में आप घुस सकते हो बट यू हैव टू डू योर होमवर्क. बट if you're going to speculate everything, then you'll not end up buying anyone. So I think the only thing that Kavya is looking at or Sunrisers is looking at the franchise is भाई कैप्टन सॉलिड मिल गया हमारे को. Irrespective like चलो खेलेगा मोस्टली तो खेल लेगा. फिट ही रहता है. 30 years old, like he's your age probably. So I think he'll prove to be fit. I mean Pat Cummins doesn't get that injured in my memory. He's not been injured for a very long time. Yes, he is a fast bowler. They do know how to manage their workload. That's one thing that you have to give Australians, that they do know how to manage their workload. They probably might not play the entire summer, and then they know भाई इतना पैसा मेरे को जिंदगी में नहीं मिलेगा. So I think I think Pat Cummins will be retained 100% मेरे ख्याल में, because captain आपको मार्केट में ढूंढ के भी नहीं मिल रहा अब, जो आपको 2-3-4 साल दे सकता है. And I think Cummins will give you that. Look, even how did you get him? You got him like in that mini auction. Because of the World Cup, he became available, and World Cup के बाद उसका वो हो गया. So I'm just saying in IPL like 1-2 साल अगर अच्छा फॉर्म चला, that doesn't mean तीसरा साल भी चलेगा, चौथा साल भी चलेगा. So just go with. वही है ना भैया कि हर साल अपन ऑक्शन थोड़ी होगा अपने को. हर साल नहीं हो रहा. मिनी ऑक्शन होगा, but you can only add play, like you will release it, but आपका पर्स छोटा हो रहेगा. You might not be able to like. So what is going to happen? Captain आप हर साल नहीं like but from my understanding, like in the last 4 or 5 years, Sunrisers, right? We've changed the captain almost every year, bro. Warner से Williamson 2 साल करा. Williamson के बाद फिर अपना ये बीच में भी कोई करा. देखो मार्करम से पहले भूवी करा शायद. Like we've had like 5 captains in the last 5 years. जाके Pat Cummins पे अटके. So that is also a thing you can have. Now if you go into this auction with 35-40 crore. Yeah, 40. Then you need to do a lot of bargain buys, and it can be difficult. Ibrahim was saying something else about RCB. He was saying that Virat Kohli has been considered to be the captain for RCB. I mean strong उसमें तो नहीं दिख रहा मेरे को. Lot of speculation on KL Rahul because of the requirement of him being a wicket keeper and Dinesh Karthik retiring and local homegrown. So KL Rahul is not going to stay in Lucknow Super Giants. अभी तक तो यही है कि भाई there is going to be a meeting between the Goenka family and KL Rahul and like the entire lot. का नया कोच कौन है यार LLC का, जो भी LSG का जो भी कोच है, जस्टिन लैंगर एंड जहीर खान, जस्टिन लैंगर एंड द गोयंकास आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग एंड देन दे आर गोइंग टू डिसाइड हु दे वांट टू रिटेन फ्रॉम देयर करंट स्क्वाड. नाउ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग मयंक यादव and they want what's that guy Puran to be captain. Nicholas Puran to be not a bad shout. Not a bad shout, man. That guy has been on next level performance in T20. Virat Kohli I don't think should take the captaincy. I mean Virat Kohli, see, he had the opportunity to win in India and absence. He's not considering, I think now. He's not a good T20 captain. He doesn't want to be captain now. But do you think he's a good T20 captain? I mean, no. He for a test he's the best, but like for T20, thoda. I mean, it's better that he just focuses on his batting now, like rather than अभी ये इतना टाइम हो गया करियर में, आप कैप्टनसी बन चुके हैं, फिर आप क्यों करना चाह रहे हो after leaving it, you know. And he's not one of those that छोड़े बात चीज़. हाँ कभी ले लेता उन्हें when you know he was injured, Faf was injured, but I don't think he should be captain and stuff like that. I think he's a great. You have to retain him. वैसा batsman खिला दो उसको, but he can always give input to the captain, right? 100%. And then he's done it in absence of Faf, right? Like so, the emergency में तो he'll be there and he's always on the one talking to the captain. Because I think Virat Kohli पे अगर आप वो captaincy का pressure डाल देंगे, then again वही full circle शुरू हो सकता है, right? Like. It'll put a lot of unnecessary pressure, and already he's at a stage where he's focusing on his batting, so I think that's the best
expecting to do. Yeah, मुंबई का मेन मसला मुंबई में है. Who are you going to retain? We got so many options there. अब सूर्या की बात तो I'm pretty sure चल रही है for a captaincy spot. Jasprit Bumrah also is trying to be very eager That's to get a difficult. captaincy. अगर जसप्रीत उनके हाथ से चले गया ना भाई, वो सबसे बड़ी लॉस I think for Mumbai Indians. अगर जसप्रीत बुमराह is the Captain. if he goes into the auction, Yeah. uh, People will throw checkbooks at him, man. yeah, then if he goes into the auction, it's going to be Because crazy. see, I'll tell you the biggest club that will go for him, Gujarat Titans because he's Gujarati, Punjab Kings because he has a Punjabi background, and Punjab Shikhar Dhawan is retired. Shikhar Dhawan is going to maybe be in the auction, I don't know, but Punjab is looking for a new captain as well. Ricky Ponting might pull Rishabh Pant towards him in Punjab Kings. Yeah. That's also one link That's a that you can put. possibility. So it's all over the place. That's what I mean. Cummins is one guy that settled in Hyderabad, and I think, like Mustafa Bhai said, Cummins will get who he wants according to his team. He is definitely going to approach people. He's going to talk to people, talk to Kavya, talk to the man. I definitely think that he's an excellent captain. I mean, the way we've seen cricket change under him and his bowling rotations and his plans. Yeah, and the style of ideology, play was yeah, very good. Yeah, so मगर वही है कि like and that's what will attract people to come and play for. yeah, 100%. I think that's a very good point. आप जो बोले कि attract होने वो करा, so I think that's definitely true. I just want to have fun in the auction, so I'm saying, bro, like just release everyone and see what Yeah, happens. yeah, 100%. भाई अर्शदीप ऑक्शन में आने वाला है. काव्या मैडम को बोलो ऑल इन छाओ बोल के बॉस. भाई ऑल इन के लिए पहले तो देखना पैसे होगा रहना पैसे पड़ता हैं अपने पास ऑल इन जाने के लिए. अरे अर्शदीप भी अगर आ गया ना भैया आपके पास, फिर भी लाइक यू विल हैव टू सी द स्प्रेड अक्रॉस द बुफे बोलते हैं ना, वैसा है. बोलेगा आप हर डिश को देखना पड़ेगा कौन सी है. अगर आप अर्शदीप पे ऑल इन चले गए और एक यू नो लाइक लेट्स से मयंक यादव रिटेन नहीं हुआ, और जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट समवन एल्स माइट जस्ट कम अप एंड यू लाइक अरे भाई इन्हें भी है. एंड या आई मीन देखो अर्शदीप को ले सकते हैं आप, बट उन्हें बोल रहा क्लास इन 31 32 का है. Yeah, he's दे दो 32, फिर पैसे. क्लास इन ट्रेविस हेड एंड दे दो फिर क्लास इन ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नितेश रेड्डी. अभिषेक शर्मा भी क्या खेल रहा भाई. अभिषेक शर्मा को भी कैसे छोड़ेंगे फिर. वही है ना भाई, दैट इज द बिगेस्ट हेडेक दैट आई थिंक दे गो ऑल रिटेंशन. So there's one thing, right? Like one thing that we're not considering is that आप ये सब पैसे spend कर देंगे, right? But you, for example, now when Rohit Sharma, if he comes into the auction, okay, Bumrah comes into the auction, you're not going to bid for him anyway because you have Pat Cummins, Yes. right? Yes. So जो भी पैसे लेंगे उसके तो पैसे गए फिर बुमराह पे, then you still have that money for like an Arshdeep or for, so that could be a possibility, But right? again subject to how many retention that person But there will be players 100% in that auction who will there will be bidding wars 100%. 100%, because 100%. मुंबई इंडियंस का ही देख लो आप, उसमें से पूरी भाई retain अगर नहीं आप होंगे, ऋषभ right? पंत को देख लो भाई, ऋषभ पंत ऑक्शन में चले गया, हाँ. भाई लोग या फेंकेंगे पैसे. तो फिर वहां पे आपको फायदा है, फिर आप ये अर्शदीप को उठा ले सकते हैं उस पे. हाँ, तो वही तो अपन बोल रहे हैं ना, दैट्स व्हाट आवर इनिशियल थिंग वाज मुस्तफा भाई वांटिंग पीपल टू गो इन द ऑक्शन बिकॉज़ आपको वैल्यू कम प्ले, अच्छे प्लेयर की वैल्यू कम में मिल I'm just saying, I'm just saying कि अगर ऋषभ पंत गया ऑक्शन में और अभिषेक शर्मा गया ऑक्शन में, राइट, प्राइस किसका ज्यादा जाएगा? अभिषेक शर्मा और ऋषभ पंत में? That's a hard question. I mean Rishabh Pant, I think, Rishabh right? Pant Like can, he's a- but like वही है ना, like how people are looking at how they're shaping up their team. He's Abhishek current is an Indian all-rounder player. as He's well. also young. He's wicket keeper. Everything. And he's He's all-rounder captain as well, like, yeah. he's captain. It'll be Rishabh Pant. चलो, Okay. ठीक है, Like हाँ, argument sake के लिए तो ठीक है. Rishabh Pant is 16 crore, for example. That will decrease this guy's price because people will go for Because Rishabh 16 Pant. करोड़ में Yeah. 9 करोड़ हो जाता है ना, 10 टीम से 9 टीम घट जाते हैं उसमें. तो I don't think Abhishek. Yeah, that's what I'm saying. If you want me to make another logic, like Rohit Sharma and for example Travis Head. Now, like अपने लिए टक्कर का मुकाबला है. But if you see the market, India's captain, marketing, Indian player, branding, ये वो, of course you're gonna go Rohit नहीं, Sharma. पहले तो भाई पब्लिसिटी जो जैसे रोहित शर्मा को तो आरसीबी हाँ. विरोही राड बोल के शुरू हो जाएगा भाई, पागल हो जाएंगी पब्लिक. If I am Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah, like I'll have to consider everything because we might say we want to go into the auction, but remember it's not a mini auction, so we don't know how much money they'll get. Yeah, so that's it's what a lot about of people are guaranteed money considering. versus unexpected and what team you're playing for, That is right? what people, and देखो अब अगर let's say players are talking to players, let's say Rohit Sharma must be talking to, I would say RCB, or let's say Rishabh Pant talking to a Chennai. It doesn't still guarantee them to go into the auction and go to those franchises, right? If they go into the auction, there's always going to be that gamble that bhai, you might end up with a franchise that you don't want to play, and that's where people will be thinking, bhai, do I just stay with this club that जो मैं already मैं हूँ इतने साल से,
या डू आई गो टू द ऑक्शन एंड बली का बकरा बन के मैं शायद अगर मिल गई तो मेरे को टीम पंजाब भी मिल सकती है या मेरे को चेन्नई भी मिल सकती है जो मुझे चाहिए. सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिस्की एलिमेंट बट यू विल गेट पेड इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट लाइक करंट इंडियन क्रिकेटर. सो या देयर इज ऑलवेज दैट अपॉर्चुनिटी. I hope you continue to have a good lineup, bro. Hate to have watched bowlers who are rotated other match. Yeah, I mean, we have been having injury-prone bowlers since like 4-5 years now. Bhuvika, though, I don't think we should keep him. He will go in the auction. You could probably pick him up for like probably 1 CR maybe. I think. I mean, all respect to Bhuvi. He's a fantastic bowler in his prime and stuff. But yeah, unfortunately, injury in the index finger hasn't been very kind to him. फिर नटराजन है, Yorkers उसके जैसे कोई डाल नहीं सकता. But again, he has a leg injury that always comes up. So हाँ, time तो आ गया है कि भाई we move on to the next generation. I'm pretty sure अगर Cummins को retain करने वाले, Cummins का game भाई बहुत smart बंदा है. He's a very smart guy. Like he knows who he wants. I'm pretty sure he's out there getting them as we speak. So. I think if Pat Cummins and that's where the headache of the captaincy is gone from Kavya's shoulder. That's I think one thing that 100% I agree with that कि like अगर उन्हें अगर पूरा देख ले रहा ऑक्शन में ये वो तो फिर आपका एक वो चले जाता राइट. टेंशन चले जाता है 100%. अब मुंबई का ये है कि भाई आप कितनों को रिटेन करेंगे तो आप जो मुंबई इंडियंस की एक लाइनअप होती थी एक ज़माने में यू कांट हैव दैट नाउ. आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दैट नाउ इन टुडेज ऑक्शन. Of having that luxury of having Tim Davis, Tilak Verma and these guys. Now you retain these. But their scouting is so good. उन लोग निकाल लेते हैं दूसरे प्लेयर रिप्लेसमेंट्स उसके लिए. उन लोग की स्काउटिंग बहुत अच्छी है मुंबई इंडियंस की. But again ऑक्शन में बहुत जाके साइड होशियारी से कर लेंगे because बजट आपका घट जाएगा. अगर उन लोग रिटेन कर रहे 5 भी रिटेन करे there still options over there who will go with lot of money in that auction. Yeah, 100%. That's what the thing is. Like ऑक्शन में जो भी जाएगा ना ये समझ के जाना या तो उसके पैसे बढ़ सकते हैं या उसके पैसे घट भी सकते हैं. And he might end up in a franchise that he never wanted to go to. So it's going to be very hard for these players to discuss. I mean, अब हमारे पास भी we have probably to let go Washington Sundar who is a good asset as well. So there are people that you're forgetting and NTR को तो retain करना चाहिए. Like man, we have to get this here. We need to get. I mean, Travis Head is one of the biggest headaches for everyone to think about. But man, वो player अलग level पे चल रहा है आजकल. And if he goes and he hits against you in that IPL 25, it's going to hurt a lot. Yeah, I mean Travis Head, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, they're all great players. I don't know. It's a tough call. I think Travis Head too. I would retain him 100% or right to match him. I'm just saying. Yeah, you have RTM. Yeah, I'm just saying you utilize that. Like, but the only thing is your RTM will be ineffective if you retain like 4-5 players, like 3-4 players. Like you'll have a very limited purse to win RTM, right? Like फिर आप फिर घट जाएंगे. मैं बोल रहा हूँ सबको भेजो ऑक्शन में. Yeah, Cummins को तो रखेंगे. Like मैं कोई डाउट नहीं है. अगर आप सबको भेज दे राइट आप एटलीस्ट 2 to 3 तो राइट टू मैच कर दे सकते हैं मेरे हिसाब से. आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग बट दैट्स व्हाट could go either way. Yeah, because the thing is गैम्बल कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा आपको. Either you go with your guys, go with your team that who performed for you last year and expect them to perform again, or you put them in and then mix it up with new players as well. लोग रोहित को आरसीबी की बात कर रहे हैं. रोहित तो आरसीबी की बात कर रहे हैं. बट इफ MI लेट हार्दिक गो एंड ही जॉइंस आरसीबी इट्स गोइंग मोर हार्दिक एंड कोहली टुगेदर. It'll be crazy either way. If Rohit goes there, Hardik goes there, it'll be crazy. I mean, RCB's level will go even. It doesn't. I don't know if they'll win or not, but it'll make their brand even stronger. And RCB is someone who they're a team where they back big players. They back big players. I mean, before it was ABD, Gale, foreign players, but along with Virat Kohli, if you get a Hardik Pandya or a Rohit Sharma, that will suit their brand very well. मुंबई के लिए यही वो है कि उनकी पूरी टीम बिगड़ने वाली. Like all that fantasy that they had set up in all these years, that's going to break for sure. Surya is looking for captaincy, I think, and Surya will probably leave to Kolkata if that is. And then you have Shreyas Iyer open, who might join Delhi Capitals as a former player and captain there as well. Or Shreyas Iyer can go like maybe he might be considered also Mumbai. Like there's a lot of possibilities that because he's Maharashtra cricket as well, right? So उन्हें अगर auction में चले गया Shreyas Iyer तो फिर they might want to go and pick him up, right? So there are a lot of things that Mumbai have to consider before making a big judgment कि भाई आप रोहित को वापस कैप्टन से. भाई हार्दिक as well can be the future. जो मुस्तफा भाई बोले थे जिस रीजन से आप लिए थे maybe just continue with हार्दिक पांड्या. अभी तो उसकी फिटनेस बेटर दिख रही है from past and he's been playing good T20 cricket World Cup में. He was a very important player इंडिया के लिए. तो ये IPL का ऑप्शन अच्छा सेट कर दिया. आई थिंक जिस तरीके से वो RTMs एंड रिटेंशन एंड वो जो प्राइसिंग करे रिटेंशन की दो थोड़ा हम लोगों को महंगा दिख रहा है सनराइजर्स फैन बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो इट्स अ लिटिल बिट फेयर ऑन एवरीवन. लाइक सबके घटने वाले हैं प्लेयर. या वी कांट हैव द परफेक्ट राइट. लाइक अब जितना क्लोज आप लेके जा सकते लेके गए हम लोग
So this is the rules. Now the fun is how do you play around those rules? How do you get the best team possible? By using these rules, whatever it is, retention policy जो भी आपका उस हिसाब से आप देखना पड़ेगा. Because even if you have like a big wallet going into that, it's not like you might have to spend half that wallet on one player also. तो वहाँ पे भी फंस सकते हैं. Yeah, राजस्थान में भी देखो आप यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर, अपना बॉलर कौन ट्रेंट बोल्ट, कितने लोग हैं यार उनके पास भी सोचने के लिए कि भाई कि उनको कितने रिटेन करें. देन यू गॉट पंजाब के लिए तो इट्स इजी, दे प्रॉब्ली can back one of the youngsters or something. And ये भी होगा right अब जैसा like पहले for example it might happen with us bro, like Chahal को how did you not retain him, Rajasthan चले गया and everything. That will happen a lot also for other teams. So like for example if Ryan Parag doesn't get retained, he goes to like Punjab and kills it, they'll say how the hell did you not retain him, you retain him all these years. So this stuff will happen also. 100%. वो आप एज अ फैन ये घाट के रख लो कि वॉलेट 120 करोड़ है और ये प्राइसेस ऑफ द रिटेंशन बहुत महंगे हैं. मेरे पास एक ऑप्शन है जो बोल रहे थे राइट, इंडियन प्लेयर्स अपने शेख क्या नाम है, इब्राहिम भाई, रशीद नहीं दूसरे जो आते रहते ईशान किशन के पीछे पड़े, शकील भाई. हाँ या तो तिलक वर्मा भी ऑप्शन है बिकॉज उन्हें हैदराबाद लोकल प्लेयर है. You can build a brand around him. पहले तो पार्टी को निकाल के वो नंबर 3 जरूरी है. Yeah, you can build a brand around him. He's already leading the India A squad. He can bowl as well. He's a batsman, top order, aggressive. So he could be an option if he comes into the auction. Yeah, I mean Knight Riders का actually सोचो आप retention policy क्या हो सकती है. You've got Sunil Narayan, you've got Rinku Singh, you've got Andre Russell, you've got Shreyas Iyer, you've got Venkatesh Iyer, you've got Mitchell Stark. You've got Ramandeep Singh, you've got Raghuvanshi, you've got Varun Chakravarti. Yeah. Who do you have to keep out of the auction? It's difficult, man. Also, I don't know when Narayan Russell are going to stop, man. They've been playing for 10 so 15 years. If Surya comes into the mix, then you've got an easy captaincy option. I mean, you can just throw money and get your captain and then retain 2-3 West Indians and your 1 Indian maybe. But yeah, you'll have to negotiate. Will they know that Surya Kumar will come into the auction? If they talk to him and say, okay, we're going all in for you. So maybe, yeah, they'll probably have some kind of a deal. वैसा है, हाँ? But again, there's no guarantee. Like, we've discussed this earlier as well. Like, there's no guarantee. You might go to a franchise that you don't want to go to. तिलक वर्मा को लाओ उस्ताद, ये त्रिपाठी में नाराज नहीं, मयंक नाराज आने है. मयंक मैंने सब साफ करो, NTR को रखो, कमेंट्स को रखो, अभिषेक. अरे यार अपना भी बहुत मुश्किल है यार. जूनियर NTR दिमाग हो जा रहा है भाई सोच के किसको रिटर्न करेंगे. 31 अक्टूबर डेडलाइन से 24th या 25th 26 वन ऑफ दीस डेट्स. 31 तो आप को और मेरे को कॉस्ट्यूम पहन के करना पड़ेगा. करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, मॉक ऑक्शन करेंगे. वो कॉस्ट्यूम मतलब क्यों बोल रहा है? हैलोवीन भी है भाई. अरे भाई मैं तो ऑक्शनर का हैमर बन जाऊंगा. इट्स गोइंग टू बी फन. आई मीन द IPL ऑक्शन इज गोइंग टू बी इंटेंस. सऊदी में रहा तो मजा आएगा, दुबई में भी रहा तो मजा आएगा. These are the two people. I mean, कहीं भी रहें तो it'll be a lot of fun, man. Because everyone is going to be up after a long time. I think an auction is going to make a lot of noise. I mean, याद है एक auction unfortunately किसी का heart attack हो गया था auctioneer का, but अरे भाई उन्हें गिर गया था स्टेज से. वो तो बहुत खतरनाक. That guy is a legend. Yeah, the New Zealand. He did the first auction, right? That British guy. Yeah, I forgot his name. Up to Malika is there. Oh no, I don't know if he was the first guy. No, he was not the first. I think Charu was the first guy, no? No. Charu was one season. Charu was the replacement for the heart attack. Yeah. Then Malika came into it. Yeah, the lady auctioneer. So yeah, I mean it's going to be fun. It's going to be a lot of bidding. What is Bible? At first, the headache is now it's 23rd, and you've got 1 week exactly to plan your retention, do your call, do your WhatsApp video call, do your management meetings, do your due diligence before you get into the auction. But yeah, I mean it's going to be crazy fun. Hopefully, Hyderabad come out with a good team and a decent wallet at least to go. I think 60 crores will be a very good wallet to go into the auction. If you get. आपका ये कल का क्या प्रेडिक्शन है टेस्ट मैच का? टेस्ट मैच का India should win the toss, decide to bat first, get a decent score in. If it's a turner, I think India should just try and attack as much, maybe 200, 250 if they can, depending on when they end the batting. And then if it starts turning, then you got Jaddu Ashwin to break through and
make a follow-on score and win the test, I think. Who do you think will win the South Africa-Bangladesh test match, Ibrahim? South Africa Bangladesh का scenario क्या था? Bangladesh 60 का का lead है 81 बांग्लादेश lead or को। something? 60 81 का lead है, right? 81 का अच्छा, lead है 80, Bangladesh का. Day 3 has 3 wickets to go. So I mean, if Bangladesh get to 180, I think they'll win. 180, so another 100 100 runs runs. from here and Taijul Isman घुल जाने वाला. What if they get to 150? I mean, then it'll be on the bowling, right? It'll be Like how close Mehdi game, Hassan yeah. and Taijul will think. But yeah, South Africa do struggle a bit with spin. Though Kyle Verreynne, very good 100, I think, under pressure. Yeah, He Bangladesh- and that guy in the end, Dane Pite, that guy, fantastic batting. Oh, by the way, yesterday कल हांगकांग का मैच था इसके साथ, अफगानिस्तान के साथ. अरे अफगानिस्तान हरा दिया ना. How and कौन मारे मेरे को it took me back to 2018 बाबर हयात और निसाखत, right? If you remember the 2018 Asia Cup, I was there, that's why I remember the Sardas. I don't think I would have remembered it. Against India, Rohit Sharma was leading, Dhoni was also there in the team, Virat Kohli was taken leave for that tournament, he was the captain at that time. उसमें इंडिया आई थिंक 260 270 बनाए थे. These guys were 164 नो लॉस. इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी. अभी उन लोग की बैटिंग ऑर्डर थोड़ा स्लाइट चेंज हो गई. इन दोनों की बैटिंग चेंज हो गई एंड फिर कलैप्स करे. आई थिंक स्पिनर्स लेके आए धोनी, थोड़ा फील्ड चेंजमेंट करे. रोहित शर्मा ब्रॉट इन द स्पिनर्स एंड इंडिया वन आई थिंक इन द एंड. बट इट वाज दीस टू आई थिंक और एटलीस्ट वन ऑफ आई रिमेंबर बोथ ऑफ देम इन द टीम. दे बैटेड रियली वेल. सो दे स्टिल प्लेइंग. आई मीन दिस वाज व्हाट 6 years back. So they're still playing and they're playing in they're not emerging, they're very experienced players, but it was good to see them after a long time, man. Yeah, emerging, encouraging क्या है कि समझ में नहीं आ रहा. But yeah, I mean, it's good to see They're your yeah. knowledge first, your memory also. I mean, मेरे को No, तो because I was there याद at the है कि ground, हांगकांग yeah, से at खेले the- थे इंडिया, बट वो कब खेले कहाँ वो 2000 मैं था ग्राउंड में, इसलिए मेरे को याद है. मैं थोड़ा परेशान हो गया था because 160 for 0 bro. ट्रोल शुरू हो जाते थे अभी तक. हाँ? तो ट्रोल शुरू हो गए थे. Yeah, 160 for 0 थे उन लोग. एकदम से collapse हुए वो like so yeah, I remember that. Yeah, I mean, but yeah, fair thing. Afghanistan has qualified, aligning I think with Have they? Bangladesh in Despite emerging- losing? Yeah, with emerging cup, I think 4 points पे थे वो लोग. And India and Pakistan are qualifying from Group A. I think it's Bangladesh and Afghanistan, if I'm not mistaken. इसमें फील्डिंग बहुत Yeah, अच्छी हो Sri रही Lanka, one of है. the- कैचेस खतर आई मीन खतरनाक. स्लॉपी भी है बट सम कैचेस आर इनसेन. विकेट भी थोड़ा weird ही, मतलब अच्छा स्पिनिंग विकेट है, बट लाइक द डायमेंशन ऑफ द फील्ड अ लिटिल ऑफ, आई थिंक. लाइक तो वो एक चीज देखना पड़ेगा. बट आई थिंक Pakistan England as well, Mustafa, your thoughts on that? How is it going to go in Rawalpindi I tomorrow? think it's going to be a 50-50 game. It just depends. Pakistan, I've had them favorites to win this series, so maybe I'll put them 55 and England 45. But England will have to show up now. It's important for them to win the series as well. It'll be a good contest. Pakistan's slight favorites going in because we know what the pitch is going to be, and we know that they have the spinners now. They have the confidence, so they should also have confidence. I'm actually very excited. I think it'll be a good contest, that one. मजा आने वाला है. I mean, Even this one if is a they very win, good it's very contest. good for Pakistan's confidence as a team, I think, and the selection committee. Probably everything will finally come together in their pursuit to getting Pakistan back on the cricketing map. So it's going to be Afghanistan and Sri Lanka, Bangladesh and वो confused था मैं. So yeah, it's going to be a very important day for Pakistan cricket, and obviously India, all eyes will be on them if they fail in Pune on a turner, which looks very unlikely obviously, but you never say never in Yeah, cricket. I mean, You never say never in cricket. Ajaz Patel उन लोग घुस गए Ajaz तो? Patel is Saudi, is also in the squad is now. Santner there? Santner is going to go to the T20 squad. He's captaining there, I think. So I don't think he's involved in this test. So they have options like I mean, yeah, it should be. So you never say never. I mean, yes, Rawalpindi has been confident and stuff. So let me just go back to the team. Williamson is not going to play. Williamson is still injured. He's still going to take thing. There's Mark Chapman as an all-rounder option as well. Santner is there. You're right, actually. I think Santner is there, so yeah. you'll And see him Jacob in Duffy action. and Matt Henry, William O'Rourke, Ajaz Patel, is Sodhi is also there. So yeah, I mean, they're still. It's going to be a cracker of a game. Hopefully, we wish that India win. I mean, definitely India don't look like they're going to settle for less, because after a loss in Bangalore and at home after a long time, right? It's time to finally beat New Zealand in the second test, and Pakistan looking for glory at home after a long time, actually 1300 days or something is when they won their test in Multan. Now we look to Rawalpindi, but yeah, I think that pretty much is it. Tomorrow Bangladesh, South Africa will be wrapped up. Most probably Ibrahim Bhai says that the new ball is available for South Africa. So yeah, Rabada has been fantastic in this series as well. Like he's been bowling crazy, and उसका भी auction price शायद घट जाएगा, तो उसको भी consider कर सकते हैं actually बहुत अच्छा बोला. for an option. He's obviously fantastic, and till then everybody take care. Thank you so much for joining us, and we'll come back very soon for the latest from the IPL, from India and New Zealand, for Pakistan, England.
from the emerging cup which is going on right now, and I think India are comfortable in the driver's seat. Till then, everyone take care, and till then, cheers.